So the pulse transformer that we have is a type of transformer whose input is a bipolar square wave. तो जैसे इसकी इनपुट होगी बाइपोलर स्क्वायर वेव, तो the same will be transferred to the output. So if we want to use this the output of this pulse transformer, we obviously need to rectify it in order to obtain a unipolar square wave. इसके जो एडवांटेजेस हैं उसमें जो फर्स्ट मेजर एडवांटेज है विच इज़ ऑफ इंडेफिनिट आइसोलेशन. You have isolation between the primary winding and the secondary winding. You can obtain as much isolation between the primary side and the secondary side as you want to by adjusting the size, by adjusting the gap between the primary and the secondary. Whereas in case of the optocouplers, there was a limit of providing an isolation up to 6 kilovolt. So that limitation is now lifted in the case of the pulse transformer. The next is of indefinite frequency. तो ये एक बड़ा एक major advantage है of using the pulse transformer is that it can be used to develop a circuit, a transformer which can operate at any required frequency you want to. Whereas in case of pulse transformer, there was a limitation on the frequency as well. वहाँ पे 100 किलो हर्ट्ज तक तो लिखा होता है, लेकिन यूजुअली जितने भी हमारे पास ऑप्टो कपलर्स हैं दे विल बी ऑब्वियसली बेस्ड ऑन सम सेमीकंडक्टर आर्किटेक्चर. तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं दे आर यूजुअली नॉट made to operate beyond 20 kilohertz. तो ये जो 100 kilohertz में इकाई अभी बहुत खींचतान के क्या है, it will be around about 30-40 kilohertz. इससे ज़्यादा मुश्किल है कि आप इसको यूज़ कर सकें, बिकॉज इन दैट केस जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी पुअर हो जाएगा ऑफ द स्विच. लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ पल्स ट्रांसफार्मर यू कैन इवन डिज़ाइन अप टू you can obtain the output waveforms even at the frequencies of megahertz. इसके जो issues हैं उसमें ये है कि the definite pulse width, whereas in case of optocoupler we had a major advantage of indefinite pulse width. वहाँ पे किसी किस्म की saturation का issue नहीं था. आप same optocoupler को you could use it for 1 microsecond pulse. In order to obtain a pulse of 2 microsecond, you are using the same optocoupler and so on. Whereas in case of this pulse transformer, आपने अगर किसी एक specific frequency के लिए या pulse width के लिए आपने डिज़ाइन की है तो it will be difficult to operate it on another pulse width के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई एक पल्स ट्रांसफार्मर है उसको डिज़ाइन किया है 1 माइक्रोसेकेंड पे, तो इट कैन नॉट बी यूज टू ऑपरेट एट 2 माइक्रोसेकेंड. इसलिए नहीं होगी बिकॉज एट 2 माइक्रोसेकेंड आपका जो पल्स ट्रांसफार्मर है इट विल सैचुरेट. इसमें यह है कि आपके पल्स ट्रांसफार्मर में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव पल्स की जितनी आपके पास टाइम होगी उतनी ही नेगेटिव की होगी, ताकि जो सैचुरेशन किसी एक साइड पे ना हो. 50-50% ड्यूटी साइकिल रखना पड़ेगा हमें ऑन द पॉजिटिव साइड एंड एज वेल एज ऑन द नेगेटिव साइड. अगर इन रेशियोज़ को हम डिस्टर्ब करेंगे तो किसी एक साइड पे अल्टीमेटली हमारे जो ट्रांसफार्मर है इट विल सैचुरेट. दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज. The higher the frequency, the smaller will be the size of the transformer, but still for a transformer we will need some electromechanical equipment. कोर को यूटिलाइज करेंगे, वायर की वाइंडिंग करेंगे, तो the size of this transformer will definitely be larger and bulkier and heavier as compared to the optocoupler. तो हम इसको बिला वजह यूज़ नहीं करेंगे पल्स ट्रांसफार्मर को until unless कि हमारे पास कोई एक ऐसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन आएगी जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी की और आइसोलेशन की को ख़ास ज़रूरत है, जो कि
the optocoupler cannot meet, तो in that case only we will use pulse transformer. क्योंकि जो हमने गेट ड्राइवर की डिस्कशंस की थी कि वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट टू डिज़ाइन अ गेट ड्राइवर, उसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो ये था कि इसका साइज़, इसके साइज़ को भी मॉनिटर करना है, बिकॉज द गेट ड्राइवर इज़ डिसाइडिंग द साइज ऑफ आवर सर्किट. और दूसरा कॉस्ट फैक्टर. तो ये दो चीज़ें हैं, दे आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन द गेट ड्राइवर डिज़ाइन सर्किट. इवन अगर आप उसमें भी देखें, हमारे जो हाफ ब्रिज हम लैब में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, फॉर दैट वी नीडेड अ लॉट ऑफ स्पेस जस्ट टू इम्प्लीमेंट द गेट ड्राइवर. फंक्शन जनरेटर चाहिए थे हमें, उसके अलावा हमें आइसोलेटेड पावर सप्लाईज रिक्वायर्ड थी, और जो टोटल सर्किट था वो क्या था कि 2 स्विचेस थे एनमॉस, दैट्स इट, और एक स्मॉल रेजिस्टेंस. इवन लोड भी इतना वो नहीं था बड़ा जितना कि हमारे पास ओवरऑल गेट ड्राइवर का साइज़ था. इन द गेट ड्राइवर वी आर इंक्लूडिंग ऑल द बैटरीज जो कि इसके साथ रिक्वायर्ड थी हमें आइसोलेशन के लिए और टू पावर ऑन द optocoupler. And they are obviously these pulse transformer, they are obviously expensive because यहाँ पे अब electromagnetism involve होगी, electromagnetic components आ गए हैं, they are expensive. To address the first two problems of this definite pulse width and larger size, we use modulated pulse transformer. यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने सिंपल पल्स ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन, विच विल बी रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन इन सम केस बाय यू. द वोल्टेज ऑन द प्राइमरी ऑफ द primary side of the transformer will be Vp is equal to Np into rate of change of flux. Phi is equal to B max AC होता है, लेकिन here we are using 2 B max AC because our pulse is bipolar in nature and the maximum change in the flux can be from plus B max to minus B max. Hence the total जो ये होगा B max का change, it will be twice. And as we discussed that we will keep the this positive half, the on time, and the negative side of this pulse transformer equal, that is 50-50%. Therefore T on over Ts is equal to 50%. Ts is the total time period and T on is the time period for which we will be getting a positive pulse. So we will put T on is equal to 0.5 into Ts over here. That 0.5 will be then 1 will become 1 by 2 in denominator, and ultimately anything in the denominator of denominator will be multiplied with the numerator. So we will get Vp is equal to Np into 4 times B max AC over Ts. अब यहाँ से हम अपना जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी साइड के वो निकाल लेते हैं. Np is equal to Vp into Ts over 4B max AC. सिंपल इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, and then we can write this Ts as 1 over Fs. So the expression becomes this. Now we know that the number of turns is equal to KCU, area of winding over area of copper. This formula was discussed in the inductor design. So the total area जो होगा of winding वो होगा 2 times Np into ACU over KCU. यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने लास्ट फार्मूला के अंदर 2 का फैक्टर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, बिकॉज वी आर incorporating the area of both the primary and secondary. सिंपल दोबारा के मतलब रिपीट कर देते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं हमारे पास होते हैं KCU AW ओवर A एरिया ऑफ कॉपर. यहाँ से अगर हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो एरिया ऑफ वाइंडिंग इज इक्वल टू N इंटू ACU ओवर KCU, which is this term in the bracket, but we have multiplied this term with the factor of 2 because we want to calculate the total area required for both the primary and secondary. And then
we will write area of copper is equal to IRMS or GRMS. This is also something we have discussed in the inductor design. So the same formula of area of copper wire is equal to IRMS over GRMS, which is current density, will come in place of this ACU. Then put the value of NP, the expression that we calculated for NP in last slide. This, just put this value over here and we will get an expression like this. So let's simplify this expression further. This 2 will be cancelled with this 4, and we will be left with a factor of 2 only in the denominator, and the rest is simple. Now just cross multiply the terms on both sides, and we will get Vp peak value into RMS value of current equal to this term. And we will put this further simply rearranging this equation, and this is the final expression, which is Vp IRMS over Fs is equal to 2 times copper fill factor GRMS current density, that will be material dependent, the Bmax AC AW, which is area product. The design equation is this. So how will you proceed with this design is that first of all determine the number of turns NP using the expression of NP. Then select your design frequency. Okay, so then you need to design your or select the design frequency. With increasing frequency, the size of the transformer will decrease, but there will be some issues that power loss will increase and skin effect becomes dominant as well. Those who are with power background, for them this skin effect is going to be a lot of trouble in upcoming courses. So we need to eliminate this skin effect. The skin effect is that at higher frequencies the effective diameter of the conductor becomes less, due to which the resistance of the conductor increases and there will be more power losses in our circuit, and the current carrying capability of this conductor will be reduced. So the skin effect is nothing but, due to this skin effect, the effective diameter of this of a conductor will be reduced, due to which the resistance will increase and the ampacity, that is the current carrying capability of the conductor, will become less, due to which there could be more losses in the winding. So they become dominant. So we use a special type of wire in order to cater this effect, which is called as Leitz wire. After this you need to calculate the area product ACAW, and based on this ACAW you need to go through some standard available cores, and on the basis of that you can select your core. Features of Leitz wire. Leitz wire में ये होता है कि हम multiple strands of copper are used instead of one thick conductor, कि एक कंडक्टर लेने की बजाय, जो भी इसका AWG बनेगा वो लेने की बजाय we use smaller dia या thin dia की जो हमारे पास different conductors होंगे, we will take them together और उनको आपस में twist कर देंगे. So this is called as Leitz wire. ये Leitz wire दी हुई है नीचे यहाँ पे, जो कि मैंने अपने MS के प्रोजेक्ट के दौरान डेवलप की थी. This wire has almost 72-73 strands of AWG 27 और 28. इस रेटिंग की इस डाया की इसके अंदर 72 स्टैंड्स लगे हुए हैं, और ओवरऑल लेंथ जो है इसकी इट इज़ 150 फीट प्लस. इसमें और एडवांटेजेस भी हमें मिल जाते हैं इसके साथ साथ, कि वो ये हैं कि इट इज़ सॉफ्ट
एंड इजी टू वाइंड एज कम्पेयर टू सिंगल कंडक्टर जो इसी साइज़ का होगा हमारे पास. इट विल बी वेरी हार्ड, और बाय हैंड तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है उनको वाइंड करना. तो ड्यू टू यूज ऑफ दिस लेट्स वायर the skin effect decreases, and but there is a slight disadvantage that the copper fill factor decreases, because जब हम ये स्टैंड्स बना रहे होते हैं और फिर इनको ये इस तरह ट्विस्ट करेंगे, आपस में घुमाएंगे जिस तरह ये की हुई है इसमें, आप इन सारे स्टैंड्स को पैरेलल रख के उनको ट्विस्ट किया गया, तो उसके अंदर इनका जो कॉपर फिल फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. लेकिन बाकी जो एडवांटेजेस हैं वो उनके सामने ये जो डिसएडवांटेज है इसका, इट कैन बी इग्नोर्ड. दैट इज़ इट इज़ सॉफ्ट एंड इजी टू वाइंड एंड द स्किन इफेक्ट डिक्रीजेस. ये जो काम है लेट्स वायर के हम तब करेंगे व्हेन वी आर डीलिंग विद हाई फ्रीक्वेंसीज. एंड नंबर 2 ये हम उस केस में भी कर सकते हैं तो जब हमारे पास जो करंट रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो, और उसके लिए हमें जो सिंगल एक बहुत बड़ा कंडक्टर लगाना पड़ रहा है, उसके लिए हम मल्टीपल स्टैंड्स लगा दें ऑफ स्मॉलर रेटिंग करंट, तो इफ़ेक्टिवली जो टोटल करंट कैरिंग कैपेबिलिटी होगी वो इक्विवेलेंट हो जाएगी उसी एक सिंगल कंडक्टर के. लेकिन जो हमें एडवांटेज होगा वो ये होगा कि ये काफ़ी सॉफ्ट होती है उससे और इजी होती है वाइंडिंग में. लेट्स सी एट द रिस्पॉन्स ऑफ द पल्स ट्रांसफार्मर नाउ. ये वाली वेवफॉर्म आपको दिखाएगी, ये जो कंप्लीट स्क्वायर सी है. दिस इज़ द आउटपुट ऑफ एन आइडियल पल्स ट्रांसफार्मर, और ये जो बीच में इसके ये वेवफॉर्म ड्रा की गई है ये वाली, दिस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ अ रियल ट्रांसफार्मर. इसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं, इसमें हर एक जो पार्ट है इसकी एक अलग से एनालिसिस है यूजिंग द इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ द ट्रांसफार्मर. लेकिन शॉर्टली हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो आइडियली क्या होना चाहिए था कि जो पल्स है वो बिल्कुल इस तरह यहाँ से स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे देयर इज सर्टेन डिले एंड ये एक लैग के साथ राइज हो रही है इसकी पल्स. दिस इज़ ड्यू टू द LS, और LS के हमारे पास जो इक्विवेलेंट मॉडल इसका हम ड्रा करेंगे ट्रांसफार्मर का, उसकी जो सेकेंडरी साइड की इंडक्टेंस है वो, एंड वी नो दैट जो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जहाँ पे जब हम ये वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही होगी तो ये क्या करेगी, अपने सोर्स को अपोज करेगी. जब प्राइमरी के ऊपर हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, सो ड्यू टू दैट जो भी कोई फ्लक्स लिंकेज वगैरह बन रही है ड्यू बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो जो सेकेंडरी की इंडक्टेंस होगी इट विल पोज इट्स इफेक्ट्स विच इज़ प्रोड्यूसिंग और इंड्यूसिंग अ वोल्टेज ओवर दैट, ड्यू टू विच एक इनपुट और आउटपुट के बीच में देयर इज सर्टेन डिले एंड दिस राइज टाइम. Then there is this issue of the non-flat top. This is due to the RP and NP. RP is the resistance of the wire of the winding on the primary side, and NP is the number of turns on the primary side. तो ये जो attenuation आ रही है और जिसकी वजह से एक non-flat top बन रही है, this is due to RP and NP. एंड देन दिस लास्ट पार्ट विच इज़ कि ये जो इसकी हमारे पास वेव फॉर्म आ रही है रियल ट्रांसफार्मर की, ये आनी चाहिए थी यहाँ पे और यहाँ से ड्रॉप होनी चाहिए थी, बट इट ड्रॉप्स बिफोर सम पॉइंट. अगर ये हमारे पास फिनोमेना होगा तो दिस विल बी ड्यू टू द सैचुरेशन ऑफ द कोर. इफ़ अवर कोर सैचुरेट्स जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे ये होगा कि हमारी जो वोल्टेज होंगे वो ड्रॉप कर जाएंगे टू द 0 पॉइंट. ये एक शॉर्ट हल से काफ़ी है इसका. थैंक यू वेरी मच.